Hi students, welcome to a new class and to a new topic. So today we shall learn another poem written by the great Rabindranath Tagore. So the topic is the flower school. So first of all we shall see the leading part. Flowers are a beautiful creation of God. We enjoy their beauty, smell their fragrance and refresh our mind. But do you know that they also go to school? Where is their school? Who teaches them? Do they have full freedom at school or have some restrictions? Do they have holidays and all? So read the poem to know the answer. So let us read the poem to know the answer to these questions. Your teacher reads the poem aloud. Listen to the teacher without opening the book. See, he or she reads the poem again. Now open the book and follow him, her line to mark the ways of reading and get the meaning and message out of the text. Okay. So now let's read the poem. When storm clouds rumble in the sky and June showers come down, the moist east wind comes marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos. So when storm clouds rumble in the sky, okay, storm clouds, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଟାଇପ୍ର ଆସେ ବା ଝଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଆସେ ତ କୁହନ୍ତି କ'ଣ storm. So when storm clouds ବା ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ rumble in the sky, it produces continuous and deep sound. See the meaning of the rumble, to make a long and deep sound. So ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆକାଶରେ କ'ଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, and the June showers come down, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ମେଘ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗର୍ଜି ଉଠେ ଏବଂ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ. So the first stanza, when storm clouds rumble in the sky and June showers come down, the moist east wind comes marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos. ପିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଏଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡସ୍ କ'ଣ ରହିଛି. ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟର୍ମ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ. ରମ୍ବଲ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଲଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ ସାଉଣ୍ଡ. ଓକେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏବଂ ଗଭୀର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ. କେଉଁଟା? କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି କରେ. ଆଣ୍ଡ ଜୁନ୍ ସାୱାର୍ସ କମ୍ ଡାଉନ୍, ଏବଂ ଏହି ମୌସୁମୀ ଜନିତ ଏ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ମାସର ଏଇ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା, ଜୁନ୍ ସାୱାର୍ସ, ସାୱାରର ମାନେ ହେଉଛି ନଟ୍ ହେଭିଲି ରେନ୍, ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେବା. ଏ ଯେଉଁ ଅସରାଏ ଲେଖାଏ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜୁନ୍ ସାୱାର୍ସ କମ୍ ଡାଉନ୍. ଦ ମଏଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ କମ୍ସ ମାର୍ଚିଂ ଓଭର ଦ ହିଥ୍ ଟୁ ବ୍ଲୋ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟାକପାଇପ୍ସ ଏମଙ୍ଗ ଦ ବ୍ୟାମ୍ବୋଜ୍. ବର୍ତ୍ତମାନ এই সেন্টেন্স ଦେଖିବା. ମଏଷ୍ଟର ମାନେ ହେଲା ୱେଟ୍. ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ? ୱେଟ୍ ଅର୍ ଆର୍ଦ୍ର. ୱେଟ୍ ମିନ୍ସ ୟୁର୍ ମଏଷ୍ଟ. ଓକେ, ଦ ମଏଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ୱାଇଣ୍ଡ, ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ସେ ସମୟରେ ବହେ. ଇଟ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ମାର୍ଚିଂ ଓଭର ଦ ହେଥ୍. ମାର୍ଚିଂ ଓଭର ଦ ହେଥ୍, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଅ ମନ୍ଥ. ମାର୍ଚ୍ଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି when you walk in the military pattern. ମିଲିଟାରୀ ବା ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଚାଲନ୍ତି, ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍. ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ତରିକାରେ ମିଲିଟାରୀ ବା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ. ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବହୁଛି, ସତେ ଯେମିତି ତାହା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସତେ ଯେମିତି ତାହା ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛି. ଏଠି ମାର୍ଚିଂ ମିନ୍ସ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା. ମାର୍ଚିଂ ଓଭର ଦ ହେଥ୍, ହେଥ୍ ହେଉଛି ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଓପନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରଫ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍. ଆମେ
या पूर्व गोटे चैप्टर रे गोटे वर्ड देखिथिले मिडोज। मिडोज होची ओपन ग्रासी लैंड। एटा कोन होची द हेथ। हेथ मीन्स ओपन लैंड ऑफ रफ ग्रास, जोठी अनाबना घास आ विभिन्न जंगल सब उठी थाए, ताकू कहती हेथ। तेणु यही समय कौन करे ना पूर्व दिगरु यही जो आर्द्र वायु बहुत जलीय बाष्पयुक्त वायु प्रवाहित हुए ताहा मार्च करे बा ताहा कौन हुए ताहा से पवन माड़ी चले कहा उपरे हेथ। गोटे हूँ खोला अनुर्वर जमी जोठी घास अनाबना घास और विभिन्न गुल्म इत्यादि उठी थाए। हेथ टू ब्लो इट्स बैक पाइप्स अमंग द बैम्बोज। सो पिले एठी गोटे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कथा कहगला बैक पाइप्स। बैक पाइप्स। सो नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई द पोएट हैज कंपेयर्ड द साउंड विथ बैक पाइप्स over the heath to blow its bagpipes, so the moist east wind, okay, पूर्व दिगरु प्रवाहित हेउथिबा आर्द्र वायु तार बैकपाइप्स वादन करुची। तो एते गुडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भितरु पोएट एई इंस्ट्रूमेंट को काहे की बाचिछंती द बैकपाइप्स। द रीजन इज bagpipe is a musical instrument with pipes that are sounded by the pressure of wind emitted from a bag squeezed by the player's arm। एबे वर्तमान कहूची बोले सुनो, बैकपाइप होची गोटे चमड़ार गोटे थली युक्त थाए। बैकपाइप्स रो फोटो बा इमेज मध्य तुम देखिथिबो, गोटे चमड़ार गोटे थली थाए जो गुड़े पाइप मध्य से बाहरी थाए। बैकपाइप बजाउथवा बादक कौन करे निज हाथ द्वारा निज आर्म द्वारा से जो थली को प्रेस करती। प्रेस करने द्वारा से जो सब बाउंसर जो नली लगी थाए से ध्वनिटा निर्गत हुए। तेणु एठी कवि रवींद्रनाथ टैगोर या कहीं तुलना करछंती ना जेतेबेले एमंग द बैम्बो जो बाउंस बण अच्छी बाउंस बण देकी जेतेबेले पूर्व दिगरु प्रवाहित होउथुबा आर्द्र वायु प्रवाहित होउची सेतेबेले से बैकपाइप्स नामक वाद्य यंत्र जो प्रकार शब्द बाहरी से प्रकार शब्द मध्य एठी सृष्टि होउची। ओके, बहुत सुंदर कल्पना देख। बैकपाइप्स रे जेमती विंड रो प्रेशर द्वारा बाउंस मध्य देकी जो भली भाबरे शब्द बा ध्वनि, ठीक सेमिति एठी कवि लिखिछंती जे पूर्व दिगरु आसुथिबा आर्द्र वायु जेतेबेले बाम्बोज बा बाउंस बन देकी प्रवाहित होउची सते जेमती सेई भली शब्द सृष्टि होउची जहा बैकपाइप्स नामक वाद्य यंत्र सृष्टि हुए। So finally, I read the first stanza once again. When storm clouds rumble in the sky and June showers come down, the moist east wind comes marching over, अग्रसर हुए माड़ी चले, marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos. Now the second stanza. Then crowds of flowers come out of a sudden from nobody knows where and dance upon the dance upon the grass in wild glee. Then crowds of flowers, crowd होची गहली, एटी फूल मानकर गहली बा plenty of flowers come out। ए जो वर्षा दिन रो मौसमी जनित वर्षा द्वारा कौन होइची ना जो अनुर्वर घासयुक्त जगह थिला से जगार हठात बहुत गुड़े फूल गछ देखा जाती। देन क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स गुड़ाई फूल गछ देखा जाती। कम आउट ऑफ अ सडन आकस्मिक भाव से सब देखा जाती। फ्रॉम नोबडी नोज वेयर से सब फूल कौटू आसे, वर्ष तमाम से सब फूल कौटी थिले, हठात एते गुड़े फूल गछ कौटू आसिले। And dance upon the grass in wild glee. And here the poet, the great Rabindranath Tagore, imagines that like the flowers when bloom with very amusing and attractive color, he feels that the flowers gloom, the flowers dance, written in wild glee, jahara bohire tomra mane dechi, in very excited and happy way. So after the rain showers, when upon the grassy land, when the flowers come out, the poet imagines that the flowers
They are very happy, they move here and there, and they are very excited and they dance. He imagines that these teeny flowers dance. Mother, I really think the flowers go to school underground. They do their lessons with doors shut, but if they want to come out to play before it is time, their master makes them stand in a corner. ओके सो एठी कवि तांको मां को कहउछंती कवि जो कल्पना करूछंती जो भावना करूछंती से कथा को तांको मां को सहित से शेयर करूछंती मां को सहित तांकर से निजर से काल्पनिक कथा को शेयर करूछंती मदर आई रियली थिंक द फ्लावर्स गो टू स्कूल अंडरग्राउंड होची भूतल ओके अंडरग्राउंड भूतल तो से कहते जे माँ सते जमीती तांकर ए फूल गुड़िकर मध्य गोटे विद्यालय अच्छी बा स्कूल अच्छी ए फूल गुड़िक जमीती ए माटी तले तांको पई गोटे स्कूल अच्छी से स्कूल रे जमीती से माने से स्कूल को जानती दे डू देयर लेसन्स विथ डोर शट एवं डू देयर लेसन्स मीन्स पाठ पढ़िबा दे स्टडी एवं से माटी तलर तांको पई जो माटी तले तांको पई जो विद्यालय भगवान सृष्टि करिसंती से विद्यालय रे से माने पाठ पढ़ंती केमिति पाठ पढ़ंती ना डोर क्लोज करी विथ द डोर्स शट एंड इफ दे वांट टू कम आउट टू प्ले बिफोर इट इज टाइम एवं बिफोर देयर स्टडी फिनिशेस बिफोर देयर लेसन्स फिनिशेस इफ दे वांट टू कम आउटसाइड देयर मास्टर्स मेक्स देम स्टैंड इन अ कॉर्नर तेणु से पाठ पढ़ा सरिबा पूर्वर फूल मानकर स्वभाव होउची प्रफुल्ल रहिबा खेलिबा सतेज रहिबा आनंद रे रहिबा तेणु फूल गुड़िक माटी तले बा भूतल विद्यालय रे पाठ पढ़ंती कबाट बंद करी आ जेतेबेले भी सेमानकर पाठ पढ़ा सरिबा पूर्वर खेलिबा पई बाहरंती बा आसंती सेतेबेले सेमानकर मास्टर और द क्लास टीचर सेमानकर जे भी क्लास टीचर बा टीचर मेक्स देम स्टैंड इन अ कॉर्नर as a sign of punishment or as a punishment he punishes them and make them stand in a corner तांको गोटे कोण रे छिड़ा करि दियंती it happens in our materialistic life आम पार्थिव जगत रे बस विद्यालय मानकर ए भली घटे whenever someone makes a mistake or whenever someone does anything wrong in the classroom the teacher punishes him or her and one of the punishment is standing in a corner गोटे कोण रे छिड़ा करै दबा ये होची गोटे प्रकार दंड सो ए स्टैंजा रे कोन देखिले पोएट रविंद्रनाथ टैगोर he feels that he compares the teeny flowers with the young children छोट छोट फूल गुडे को से शिशु मानक सहित बालक बालिका मानक सहित तुलना करिसंती he feels that mother I really think माँ मु भाबुची ये फूल गुड़िक माटी तले थिबा विद्यालय को जाउछंती जोठार से माने गेट बंद करिबा कबाट बंद करी से माने पाठ पढ़ंती आ जेतेबेले भी से माने खेलिबा पई बाहरंती से मानकर निर्धारित समय पूर्व जेतेबेले भी से माने खेलिबा पई बाहरंती से मानकर शिक्षक बा टीचर मेक देम पनिश्ड एंड तांको गोटे कोण रे छिड़ा करै दियंती when the rains come they have their holidays when the rain comes they have their holidays अब जेतेबेले वर्षा आसे सेतेबेले जाई सेमानकर छुट्टी हुए branches clash together in the forest and the leaves rustle in the wild wind the thunder clouds clap their giant hands and the flower children rush out in races of pink and yellow and white बढ़िया exactly in his imagine Rabindranath Tagore is a lover of the nature I mean पढ़िबा पले इटा आगु को अछि about Rabindranath Tagore so he imagines that this young children and these teeny flowers they are alike
So when the rain comes, they have their holidays. Branches clash together in the forest. एवं यही वर्षा समय कौन होची ना ब्रांचेस क्लाश टुगेदर क्लास रो माने होची हिट अगेंस्ट वन अनदर ड्यूरिंग द स्टॉर्म गोटे झड़ बेले कौन हुए गछ गछ सहित पिटी हुए डाल डाल सहित पिटी हुए पत्र मानकर खसखस शब्द मध्य सुनिबा को मिला जाए इट इज क्वाइट नेचुरल सिनेरियो in case of some natural calamities or during a storm. So he says branches clash together in the forest. एही समय कौन होची ना जंगल रे गछर डाल गुड़िक परस्पर सहित पिटी होउछंती and the leaves rustle in the wild wind. Wild wind, so he has compared wild wind. Wild शब्द माने होची बणुआ पवन नुहे ये जो तीव्र पवन अनकंट्रोलेबल वाइंड ये जो तीव्र पवन बहुची ये तीव्र पवन रे कौन होची लीव्स रस्टल गछर पत्र गुड़िक कौन होचंती जेते बेले डाल को डाल पिटी होची सेठी पत्र माने कौन करूछंती मध्य परस्पर सहित घसी हेई खसखस शब्द सृष्टि करूछंती एंड द थंडर क्लाउड्स एवं एही समय जो शीतल मेघ खंड गुड़ाक सबू दे क्लैप देयर जायंट हैंड्स जायंट माने होची राक्षस बा जायंट माने मध्य अति विशालकाय एवं ये जो ठंडा मेघ गुड़िक सते जेमिति सेमाने सेमानकर दीर्घ हस्त को व्यवहार करी ताली मारुछंती द थंडर क्लाउड्स क्लैप देयर जायंट हैंड्स सते जेमिति एई बड़ बड़ शीतल मेघखंड गुड़िक सेमानकर प्रशस्त हाथ को बेलाई ताली मारुछंती and the flower children rush out in the dresses of pink, yellow and white. एवं ये जो flower children, ओके ये जो फूल गुड़िक बा ये जो फूल शिशु गुड़िक एठारे फूल को सेमाने शिशु बा चिल्ड्रेन सहित तुलना करिसंती एवं यही फूल शिशु गुड़िक कौन करुछंती दे रश आउट इन ड्रेसेस वेरी ईगरली दे रश आउट मीन्स व्हेन वी क्विकली कम आउट रश आउट आम कहते डोंट रश माने व्यस्त बा तरतर हो ना एवं यही भली परिस्थिति रे दे रश आउट ओके सो until their holiday they were underground in the school. So when the rain comes they become happy as it is the time of their holiday and they come out eagerly in the dresses of pink, yellow and white. तो फूल गुड़िक कौन है पिंक हूँ आमर गोलापी येलो हलदिया और व्हाइट जो फुटुची हियर पोएट हैज इमेजिन्ड और द पोएट इमेजिन्स दैट these flowers are children and children sorry it's children and the children put on different type of clothes शिशु माने विभिन्न प्रकार पोशाक शिशु मान को सजई दि जाए ये छोट छोट फूल गछ गुड़िक सते जमीती से वास्तविक रंग नुहे गोलापी कलर फूल अच्छी हलदिया कलर फूल अच्छी आ धला कलर मध्य फूल अच्छी किंतु कवि ये कल्पना करुछंती एई जो भूतल पाठ पढ़ुवा आ वर्षार आगमन को बा सेमानंकर छुट्टी समय को अपेक्षा करी रहिथिबा एही फूल रूपक शिशु गुड़िक जेमती वर्षार आगमन होईची से माने गोलापी हलदिया एवं धला रंगर पोशाक सजई हेई बाहर को चली आसती जमती शिशु मान विभिन्न प्रकार रंग बेरंगर पोशाक सजई दि जाए सो द रश आउट इन द ड्रेसेस ऑफ पिंक येलो एंड व्हाइट तेणु फूल गुड़िकर जो रंग जो नेचुरल रंग ताकू एठारे कवि से मानकर पोशाक सहित तुलना करिसंती So once again let's read me. Branches clash out in the forest and the leaves rustle in the wild wind. The thunder clouds clap their giant hands and the flower children rush out in dresses of pink, yellow and white. So pile ei jo stanza perhaps your third stanza yaku jati lekhiba tebe मौसुमी जनित असराए वर्षारे जेतेबेले ओपन ग्रासी लैंड रे जेतेबेले विभिन्न रंगर फूल जेतेबेले गोलापी हलदिया आ धला रंगर फूल गुड़िक जेतेबेले फुटंती एहाको कवि लक्ष्य करी कथा कहउछंती जे सते जेमिति ब्रांचेस क्लास टुगेदर
गछर जंगल रे गछर डाल गुड़िक परस्पर सहित पिटी होउछंती एवं पत्र गुड़िक मध्य परस्पर सहित घसी होई खसखस शब्द सृष्टि करुछंती आउ थंडर क्लाउड्स ए जो धड़ा बरफ भली जो बरफ खंड गुड़िक बा मेघ खंड गुड़िक कौन करुछंती ना सेमानंकर प्रशस्त हाथ को मेले जेमती ताली मारुछंती स्वागत जणाउछंती ए सबु छोट छोट फूल गुड़िक आउ एमाने मध्य गोलापी हलदिया आउ धला रंगर पोशाक रे सजई हे खेलिबा पई बाहर को चली आसंती एज दे हैव हॉलिडेज Do you know, mother, their home is in the sky where the stars are. Haven't you seen how eager they are to get there? Don't you know why they are in such a hurry? Of course, I can guess to whom they raise their arms. They have their mother as I have my own. Last stanza पे देखो तापर से तांको मां को लक्ष्य रे मां को उपलक्ष्य करी कहउछंती डू यू नो मदर देयर होम इज इन द स्काई वेयर द स्टार्स आर ओके जोठी तारा माने अछंती आकाशर जो जगह तारा माने अछंती बा जोठी तारा माने अछंती सेही स्थान होउची सेमानंकर प्रकृत घर हैवंट यू सीन हाउ ईगर दे आर टू गेट देयर तबे कोन केबे मा देखि ना हो से माने केते व्याकुल से पहुँचवा से जगह को जीवाई डोंट यू नो व्हाई दे आर इन सच ए हरी तुम्हें कौन जानी ना हो जे प्रकृत में डोंट यू नो तुम्हें कौन जानी ना हो प्रकृत में कहीं से माने एते तरतर होउछंती एते व्याकुल होउछंती से जगह को जीवाई ऑफ कोर्स आई कैन गेस टू हुम दे रेज देयर आर्म्स तापर कहउछंती ऑफ कोर्स आई कैन गेस ताले निहाती भाव रे मु यह अनुमान करि परिबी सते जेमिति फूल गुड़िक निजर हाथ मेले दौरान जनक आड़क से जनक किए फूल गुड़िक ओपन से जो ग्रासी लैंड रे वर्षार आगमन रे फूल गुड़िक फुटी आ सते जेमिति फूल गुड़िक से हाथ से माँ आड़क बढ़े दौरान वाई बिकॉज अ चाइल्ड रेज हिज और हर आर्म टू गेट द अफेक्शन ऑफ हर मदर और हिज मदर to feel the warmth in his lap माँ कोलर उष्मता पाइबा पाई मार आलिंगनर उष्मता पाइबा पाई शिशु सबु बेले तार हाथ को बढ़ाई दिए तो से कहउछंती ऑफ कोर्स आई कैन गेस टू हुम दे रेज देयर आर्म्स कहउछंती संभवतः मु निहाती भाव रे जानि छी कहा आड़को फूल गुड़िक से मानकर हाथ बढ़ी दउछंती दे हैव देयर मदर एज आई हैव माय ओन तेणु से तारा मानक गहन से माँ बास करती जमीती मो माँ से तारा मानक सह आकाश रे रहउछंती तेणु से माँ मध्य से तारा मानक गहन रे रहउछंती जो मानक आड़कू यही सुंदर फूल गुड़िक नानादी रंगर फूल गुड़िक से हाथ मेले दौरान टू बी इन हिज मदर्स लैप टू हग देयर मदर तांको माँ को आलिंगन करने माँ कोल को जीवाई यही क्षुद्र क्षुद्र रंगीन फूल गुड़िक से हाथ को प्रशस्त कर दौरान तो पे मैंने यहीटा थिला दिस इज ऑल अबाउट द पोएम एबे देखिबा अबाउट द पोएट ओके सो योर ई पार्ट रविंद्रनाथ टैगोर was born in Kolkata on 7th May 1861 he was a great poet कवि पेंटर चित्रकर पेट्रियट देशभक्त प्ले राइट नाट्यकार नोवेलिस्ट औपन्यासिक स्टोरी टेलर कहानीकार फिलोसोफर दार्शनिक एजुकेशनिस्ट एवं शिक्षाविद सो एग्जैक्टली रविंद्रनाथ टैगोर is a great man. The common theme in his writing is nature. तांका लेखा गुड़िकर साधारणतः विषय वस्तु थाए नेचर बा प्रकृति प्रति प्रेम तांका लेखार मुख्य विषय वस्तु. नेचर लेफ्ट अ डीप सीटेड इम्प्रेशन ऑन हिम. तेणु प्रकृति प्रेम तांकर मन बा तांकर मानसिकतार एक गभीर छाप छाड़ीला. नेचर लेफ्ट अ डीप सीटेड इम्प्रेशन ऑन हिम. ही वॉज एनचांटेड बाय नेचर. एनचांटेड मीन्स डिलाइटफुली चार्मिंग. अति आकर्षण तीव्र आकर्षण जो जिनसटा को थाए कहते एनचांटेड.
सो ही वाज एनचांटेड बाय नेचर, से प्रकृति द्वारा बहु मात्रा रे मोहित होइथिले। इट इनकलकेटेड अ सेंस ऑफ फ्रीडम इन हिम, तेणु तांको भितरे गोटे स्वाधीन चिंताधारा, गोटे स्वाधीन भावधारा तांको भितरे यह प्रभाव पकईथिला। इट इज ऑल्सो द इनर वॉइस ऑफ हिज पोएट्री, तांको काव्य कवितार यह होची अंतस्वर। ही बिकेम द फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि। दिस इज द मैटर ऑफ प्राउड। ही वाज द फर्स्ट एशियन, एशिया महादेशर प्रथम नागरिक हिसाब से 1913 मसीह तांकर महान काव्य ग्रंथ बा काव्य संग्रह बा काव्य संकलन गीतांजलि पाई सर्वप्रथमे से नोबेल पुरस्कार रे सम्मानित होइथिले। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड म्यूजिक, से मध्य निजर कला एवं संगीत पाई मध्य से परिचित। ही इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, कला एवं संगीत जगत को रवींद्रनाथ टैगोर जो अवदान रही तापाई मध्य से परिचित। सो दिस वाज अबाउट द पोएट। एबे देखिबा अबाउट द पोएम। सो ऑलरेडी पिले माने आमे वर्तमान द फ्लावर स्कूल ए पाठटा को वर्तमान आमे पढ़ी सारलेडी। एबे जहाँ भी आमे तार जिस्ट पाइथिले, जहाँ भी तार सारांश पाइथिले ताको आउ टिके भल भाबरे पढ़िबा। In this poem, the speaker is excitedly watching the monsoon rain and noticing small flowers that have bloomed all over the place. तेणु कवि कौन लक्ष्य करुछंती जे मौसुमी वर्षा आगमन जनित अनाबना घास उठिथिबा खोला जगह गुड़िकरे किछि फूल ब्लूम करंती बा किछि फूल फुटिछंती। He wonders where they had been all the year round. से भारी आश्चर्य होउछंती ए भलिया अनाबना गुल्म विभिन्न प्रकार जंगली गछ उठिथिबा जगह गुड़िकरे एते सुंदर फूल गुड़िक किभली भाबरे फुटिले, वर्ष सारा से फूल गुड़िक कोउठी थिले। मनसून आसिला परे सिना फूल गुड़िक फुटिले किंतु वर्ष सारा से फूल गुड़िक कोउठी थिले। He imagines that they must have been in school just like him. तेणु बाल्यावस्था से कल्पना करुचंती मु जेमती स्कूल रे थिली सेमती बोधे ए फूल गुड़िक स्कूल रे थिले। आ स्कूल छुट्टी होला परे जेतेबेले तांकर लीजर टाइम हेइची सेतेबेले फूल गुड़िक बाहर को आसीचंती। The speaker wonders why the pretty flowers are so eager to come out and play. The speaker wonders. He imagines that, से कल्पना करुछंती सते जेमती फूल गुड़िक अपेक्षारत थिले केतेबेले तांको स्कूल छुट्टी हबो, केतेबेले से माने अवसर पाइबे आउ आसी एठी उपभोग करिवे, एठी परस्पर सहित खेला खेली करिवे। He concludes that they too need the warmth and love of their mother. से concludes that से मध्य शेषरे निजर कल्पना निज कल्पनार परिशेष से ए सिद्धांत पहुँचुंट जे यही फूल गुड़िक निज मातृकोलर उष्मता निज माँकर आलिंगनर उष्मता पाइबाकु योग्य बा पाइबा उचित। ओके, सो एबे देखिबा नोट्स एंड ग्लॉसरी जो थे आम ऑलरेडी देखीदे। रंबल टू मेक अ लॉन्ग डीप साउंड और सीरीज ऑफ साउंड्स। शावर्स अ फॉल ऑफ रेन लास्टिंग शॉर्ट टाइम। moist, heath, bagpipes जहाँ मुझे एक्सप्लेन कली। in wild, glee, master, class, rustle, jant. So these are the words. एबे देखिबा let's understand the poem. So we have certain questions. So let's see. Let's understand the poem. देखि दोछि पले ए सेक्शन टा नले जानि परिबोनी। So now let's understand the poem, this part. सो रिमेम्बर पे गोटे क्वेश्चन भी अच्छी जे कविंकर ये कल्पना केते वास्तव धर्मी। एग्जैक्टली यू नो हैविंग अ ग्रेट नॉलेज ऑफ लिटरेचर, तेणु
बोले ये ए कथा कहले मध्य अत्युक्ति हेब नाही जे जेउठी न पहुँची पारे रवि सेठी पहुँची जाए कवि आउ कागजर मसृण बक्षरे आंके केते कल्पनार छवि। अर्थात देख जो कथा गुड़ाक भारी अनालोच्य दैट आर नॉट बीइंग डिस्कस्ड, जो कथा गुड़ाक उपरे केही भी कथा कहंतिनी, केही भी भाषण दियंतिनी, केही भी आलोचना करंती नाही, सेमिति गोटे कथा को आउ टिके आकर्षणीय आउ टिके सेथिरे माधुर्य को खोजंती कवि माने, जमिति कि पंकरे पद्म फुटे जो कथाटी अच्छी। तो एठी होची टोटल फ्लावर स्कूल कौन तांकर गोटे कल्पना प्रसूत लेखा जहाँ कल्पनार जन्म निए। दिस पोएट हैज बीन डिराइव्ड और दिस पोएट हैज बर्न फ्रॉम हिज इमेजिनेशन। केमिति कथा होची गोटे विराट बहुत बड़ खोला जगह घास कंटायुक्त खोला जगार जितेबले मौसुमी आगमन जनित फूल फुटी, यह अति साधारण घटना, एथिरे केही आश्चर्य होती नहीं। किंतु रवींद्रनाथ टैगोर ए कथाटी को उपलक्ष्य करिसंती आउ सेठी तुलना करिसंती जे ये फूल गुड़िक फूल नुहंती, ये फूल गुड़िक होउछंती छोट छोट शिशु। जेमती कि छोट छोट शिशु माने विद्यालय रे पाठ पढ़ंती, सेठी तांको जड़े जगिबा पई थांती। से माने कोनोसी प्रकार दुष्टामी कले से माने बस उठुवंती, विभिन्न प्रकार पनिशमेंट कॉर्पोरल पनिशमेंट से माने पांती, माड़ मध्य खांती। साधारण चक्षुरे जो कथाटा साधारण मने हुए, हाँ वर्षा है फूल फुटिला, किंतु रवींद्रनाथ टैगोर निजर काव्यिक दृष्टिकोण रे एक कथा को लक्ष्य करिसेंती सते जेमिति ए फूल गुड़िक फूल नुह, ए फूल गुड़िक कोमलमती शिशु जो माने शिक्षकों भय रे विद्यालय रे पाठ पढ़ुथांती आउ सुजोग खोजुथांती केतेबेले आसी निज भितरे खेलिबे, निज भितरे मजा विभिन्न प्रकार खेल खेलिबे, विभिन्न प्रकार थटा तमसा मजा करिबे। आउ ए कथा को लक्ष्य करिकि से विभिन्न प्रकार तुलना करिसंती, भूतल को से विद्यालय संगे तुलना करिसंती। ए छोट छोट फूल गुड़ी को से छोट कोमलमती शिशु मान संगे तुलना करिसंती। विद्यालय रे शिशु माने जमिति पाठ पढ़ंती सी मध्य इमेजिन करिसंती निज कल्पना रे जे सते जमिति फूल गुड़िक माटी तले रही पाठ पढ़ुथिले। जमिति आमर ब्रेक टाइम हेले जमिति बेल बाजे, एठी से कहिसंती जेतेबेले मॉनसून आसे, जेतेबेले ए रेनी सीजन जेतेबेले आसे, जेतेबेले वर्षा हुए सेतेबेले जाईकि एमानकर हॉलिडे बा छोटी समय आरंभ हुए। तेणु निहाती भाव में कवि पाखरे से फ्रीडम थाए गोटे जिनस को आउ गोटे जिनस सहित तुलना करिबा, निज कल्पनार रंग दे गोटे अति साधारण कथा को मध्य कवि चाहिए बहुत बड़ आकार रे ताकू परिप्रकाश करि पारे, जहाँ मध्य हृदयस्पर्शी होता है। ओके, तेणु किछि प्रश्न अच्छी से आम से प्रश्न गुड़िक कला बेले जानिबा जे केमिति से गोटे कंपैरिजन करिसंती जोटा कि भारी प्रासंगिक मने हुए, जोटा कि भारी उचित मने। व्हाट इज द पोएम अबाउट? ओके, so the poem is about the beautiful flowers that bloom during the monsoon rainy days, and the poet comparison of the flowers to the school going young children. What rumbles in the sky? The storm clouds rumble in the sky. पिले देखो एगुड़िक भेरी ऑब्जेक्टिव, टोटल इंग्लिश रे तुम कौन सी जगह भी लॉन्ग क्वेश्चन रो प्रश्न नाही। तेणु जेकोसी चैप्टर हो ताकू टिके पढ़ीदेले ये सब शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िकर उत्तर तुम दे पारिबो। दैट मैक्स टू 1 लाइन और 2 लाइन और 3 लाइन रो प्रत्येक प्रश्न रो उत्तर। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू पीपल। व्हाट कम्स marching over the heath? The moist east wind comes marching over the heath. Which word tells the east wind is not dry? The word moist means slightly wet. So the word moist tells us east wind is not dry. What does the moist east wind and how does the moist east wind come? The moist east wind comes marching over the heath. How do the crowds of flowers come out? The crowds of flowers come out suddenly. Where do the flowers dance and how? फूल गुड़िक
कोठी डांस करती आ केमिति डांस करती The flowers dance upon the grass. Okay, so they dance in the wild glee or in very excited manner. 8. Which season is described in the poem? So the rainy season is described in the poem. Where are the flowers all the year round? The flowers are their school underground all the year round, as imagined by the poet Rabindranath Tagore. Who are the flowers compared to? The flowers are compared to young school children. एटी क्या गुरु कहूली फूल गुड़ी को छोट छोट फूल गुड़ी को से छोट छोट कोमलमती स्कूल जाउथुबा शिशु मानक सहित तुलना करिसंती. So the flowers are compared to young school children. How do they do their lessons and why? They do their lessons by shutting the doors of their classroom. They do so because the teacher, their school teacher, is very strict. That's why they have the fear for their teacher. Okay. Who does their master refer to? Their master refers to the teacher at the school. Their master is strict or lenient. Which line in the poem tells us so? Their master is strict, not lenient. The line, their master makes them stand in a corner. Their master makes them stand in a corner. जेतबेले से माने भूल करंती टीचर से मानकु गोटे क्लासरूम रो गोटे कोण रे छिडा करै दियंती. So this line tells that the teacher is not lenient, he is quite strict. When are they made to stand in a corner? They are made to stand in a corner when they want to come out to play before their class finishes. 15 number question. When do the flowers have their holidays? The flowers have their holidays when the monsoon rains come. Monsoon rains come. 16. What changes take place in nature when the rain comes? प्रकृति रे देखो यही प्रश्न कथा मैं तुमको बुझेला बेले कहूली जिते वर्षा आसे से प्रकृति रे कौन कौन सब परिवर्तन घटे. ओके. द ब्रांचेस ऑफ द ट्री क्लास अगेंस्ट वन अनदर. गछर डाल माने परस्पर सहित माड़ हुंती धक्का हुंती एंड द लिव्स ओके रस्टल इन द वाइंड एवं से जो तीव्र पवन रे से माने खसखस शब्द सृष्टि करती. एंड इट रेन्स हेविली विथ थंडर एंड लाइटिंग. इट रेन्स हेविली विथ थंडर एंड लाइटिंग. घोर ठंडा एवं घड़घड़ी सहित वर्षा हुए. देन How do the flower children enjoy their holidays? से शिशु माने निजर फ्लावर चिल्ड्रेन फूल रूपक शिशु माने केमिति निजर छुट्टी को उपभोग करती. ओके. So they come out. So during the holidays the flower children come out with different dresses. The poet has imagined that these are not the natural colors of the flowers. These are the dresses of pink, yellow and white. They move around themselves. से मानक चारि पाखरे से माने घुरी बोलंती. So they enjoy the moment of this rainy season. 18 number. Who is the speaker sharing his thoughts with? The speaker is sharing his thoughts with his mother because it is very clear in the poem. Where is the home of the flower children? The home of the flower children is in the sky. बहुत सरल भाषा रे कथाटा भी लिखा है. Why are they eager to go to the sky? कहीं से माने आकाश को जीवा पाई चाहती. Because any child wants to be in her mother's lap, wants to hug his or her mother. So after their class finishes, simply they want to play and finally they want to sleep in the lap of their mother. So that's why they want to go to the sky. What does the speaker guess? It is speaker कौन guess करछंती. The speaker guess
The speaker guesses that the flower children raise their arms to their mother. He says, kalpana karuchanti, he imagines that, or he guesses that the flower children raises their hands towards their mother. Why are the flower children raising their arms? देखो सही प्रश्नटा को 3 थर खंडे देछि सते फूल गुड़िक जमी निज हाथ को मेलाउछंती आकाश को छुईबा पाई कारण आकाश रे जो जगह तारा अछंती से होउछि प्रकृत रे सेमानकर वासस्थान. सो सेम क्वेश्चन. देन why are they in a hurry? They are in a hurry because they want to be with their mother as soon as possible. Which line tells that the speaker also longs for his mother? निज माँ को प्रति तांकर जो भक्ति बा निज माँ को प्रति तांकर जो आनुगत्य बा माँ को सी भी झुरुछंती माँ को प्रति सी मध्य माँ को प्रति अग्रसर होबा को चाहुछंती. एटा को लाइन एक कथा को कहूची. दे हैव देयर मदर एज आई हैव माय ओन. तेणु से एठी कहिछंती हाँ मो माँ मध्य से तारा मानक गहन रे आकाश रे अछंती. दे हैव देयर मदर एज आई हैव माय ओन. सो दिस लाइन टेल्स दैट द स्पीकर आल्सो लॉन्ग्स फॉर हिज मदर. तांको माँ प्रति तांकर मध्य अनुगत्य बा तांकर मध्य से भल पाइबा रहिछि. ओके सो पहले ये सब होछि मैक्स टू मैक्स 1 लाइन और 2 लाइन रो क्वेश्चंस जो थे तुमको बेसी किसी प्रॉब्लम हम ना. एबे देखिबा लेट्स अप्रिशिएट द पोएम. ओके तुम यार सब नोट्स भी पाई जीवो किसी असुविधा नहीं. एबे देखो आई सेक्शन रे हमर कौन कौन सब क्वेश्चंस अछि. एठी वर्तमान पिले टिके लॉन्ग क्वेश्चंस अछि. एई जो 24 टा खंडे शॉर्ट क्वेश्चन कले दीज आर 1 और 2 लाइन्स किंतु एठी टिके ताकू डिस्क्राइब करबा पई पड़िबो. एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? एक्जेक्टली 7 क्वेश्चंस आर देयर. ओके आकु लॉन्ग क्वेश्चन कहि परिबानी यू नो दीज आर लाइक bit lengthier than the short questions. So let's appreciate the poem. इस सेक्शन में कौन कौन क्वेश्चंस अच्छी वर्तमान आम देखा. Why do you think the flowers dance upon the grass in wild glee? Okay देखो ऑलरेडी ये प्रश्न आम डिस्कसन कर सारीचे किंतु ये टिके वाइडर मीनिंग रे याकू एठे लिखा पड़ो. ओके सो से कहला Why do you think the flowers dance upon the grass in wild glee? बहुत आनंदर सहित तीव्र खुशीर सहित घास उपरे से माने नाचुछंती बोली तुमे काहे की भाबुच. So the answer should be like this. The expression in wild glee written by the poet. The expression in wild glee means very excited and happy way. So the beautiful flowers move around as if they dance. Their eagerness and colorfulness make it feel that they dance upon the grass in. Second question देखिबा. Do you think the speaker feels that old age? The answer is yes. Okay, the speaker feels it. Bit 3 number question. Why does the speaker think that flowers go to school underground? The speaker thinks so as the flowers bloom in the trees whose roots are underground. गछरे फूल फुटे कि जो गछर मूल माटी तले थाए. So the speaker imagines being undergrounded is their school period. स्कूल रो अवधि बा स्कूल रो समय. After what finishes स्कूल समय सरी गले पिला जमिति सांगे सांगे छत्र भंग दियंती. ओके मु एटा आउथर कहूची. द स्पीकर थिंक्स सो एज द फ्लावर whose roots are undergrounded. So the speaker imagines being undergrounded is their school period. After what finishes come out to the earth surface and seem to be very happy.
Number 4th, how does the speaker describe the storm? ये जो storm by जो झड़ से ताको केमिति कल्पना करिसंती. So sometimes storms monsoon clouds, and these storm clouds make a long and deep sound in the sky. Number 5, do you think that the speaker's description about the flowers and their school has any reality in real life? बस ए कविताटा को पढ़ेला बेले मु ए कथाटा कहिथिली जे कविंकर ए जो कल्पना प्रकृति रे किछि वास्तव जीवन रे कौन ए भली कल्पनार किछि माने अछि. उत्तर हबो नो. एटा को हम लिखिबा नो आई डोंट थिंक बिकॉज इट इज हिज इमेजिनेशन बेस्ड अपॉन कंपैरिजन. गोटे तुलनात्मक भित्तिभूमि उपर से सब कल्पना करिसंती. छोट छुआ कौन करती बारे गोटे कंपैरिजन से करिसंती. So of teeny flowers with young children. So no, I don't think so because it is his imagination based upon the comparison of teeny flowers with the young school going children. The number 6th, which elements of nature celebrate holidays with the flower children and how? Yes, प्रकृति शिशु मानकर फूल शिशु मानक सहित केमिति ए हॉलिडे को उपभोग करती. आंसर शुड बी वेरी ब्रीफ. द ब्रांचेस अंडर क्लाउड्स celebrate holidays with the flower children as they clash together, comma, they rustle and clap their giant hands respectively. गच्छ आउ ये जो थंडा मेघ खंड यथाक्रमे यही काम गुड़ाक करिकिरी दे एंजॉय द हॉलिडेज विथ द और दे participate in the holidays of the flower children. The last question, identify the lines and phrases in the poem which indicate that the flower children have a strict system of schooling. तेणु ये जो फूल शिशु बा फूल रूपक स्कूल सिस्टम भारी कड़ाकड़ी विद्यालय तांकर जोठी रूल्स और रेगुलेशंस भारी कड़ाकड़ी पालन करा जाए. को सेंटेंस बा को फ्रेज रु ए कथाटा बुझा पड़ुची. वर्तमान आमे या परे ए जो लेट्स अप्रिशिएट द पोएम ये थिला ए सेक्शन नो. बी सेक्शन रे कौन रही देखो. The poet presents a lively description of nature during the monsoon showers in June. The objects of nature seem to behave like human beings. Such a device in poetry is known as personification. Okay, माने मनुष्य मानकर आचरण जहा ये जो प्राकृतिक वस्तु गुड़ी को से भली भाव रे जेमिति कि पिलाटी कथा कहूची वास्तविक जीवन रे यह संभव किंतु आमे कथा जदि एमिति कहिबा सते देमिति दीटा गछ परस्पर भितर कथा होउछंती. तेणु देखिबा को गले साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रे गछ कोन केबे परस्पर सहित कथा ही परिबे कि. तेणु एई जो कल्पना जोठी प्राकृतिक जिनिस गुड़ा को मानवीय आचरण रे बांधिबा को चेष्टा करा जाए व्हिच इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन. तो एठी देखिबा जेमिति कि लिखिची storm clouds rumble in the sky. एई झड़ समय रे गछ झड़ समय रे मेघखंड गुड़िक कौन करती रंबल इन द स्काई. से माने लॉन्ग आउ डीप साउंड जेमिति सृष्टि करती. तो एमती आउ से कौन कौन देख रही कौन कौन पिक आउट आज मेनी एग्जांपल्स as you can find from the poem. आउ कौन अच्छी देख the moist east wind comes marching. देख मार्च रो माने होची walk in a military manner. तेणु ये कौन कराई कवि मानवीय आचरण आमे गाली करू आमे कथा कहू आमे सैन्यों भली चालू
এই মানবীয় আচরণରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗେ, ମଣିଷମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ପିଅନ୍ତି, ଉଠନ୍ତି, ବସନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତି, କଥା କୁହନ୍ତି, ଗାଳି କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ମା ଆଡ଼କୁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିବା ଫ୍ରେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଲାଇକ୍ storm clouds rumble in the sky. Second, the moist east wind comes marching. Third, the moist east wind blows it bagpipes. Crowds of flowers dance upon the grass. देखो नाचिबा सत्य कोन फूल नाचे किंतु एटी कल्पना करा जाउची फूल गुडी को जेमिति आनंद रे नाचुछंती कारण इट्स देयर हॉलिडे टाइम. The flowers go to school. The flowers do their lessons. The flowers want to come out to play. The flowers have their holidays. The thunderclouds clap their giant hands. The flowers rush out of their school. The flower children are in a hurry. The flower children raise their arms towards the sky. So these are the sentences or phrases where we get the art of personification. So a B section ro ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା सेकेंड पॉइंट कौन देखिए poet uses word pictures to bring out comparison between persons, ideas or objects with a similar quality or appearance. ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଛି ନା ଯେ ଏକା ଚରିତ୍ରର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବିଲୋ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ଦ ପୋଏମ୍ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ରିଡ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାହେଇଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ଲିୟର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ବ୍ୟାମ୍ବୋସ୍ କ'ଣ ବାଉଁଶ ଗୁଡ଼ିକ ବା ବାଉଁଶର ବଣ ନାଇଁ କି ଯେମିତି ଉଡ୍ ମାନେ କାଠ ଉଡ୍ସ ମାନେ ବି ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ତେଣୁ ଦେଖ ଏଠି ବ୍ୟାମ୍ବୋସ୍ ଓକେ ତେଣୁ ବ୍ୟାମ୍ବୋସ୍କୁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ସ ଇଟ୍ସ ଅ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଛି फ्लावर्स ओके तो फूल गुड़ी को सी क्या सांगे तुलना करछंती टू द यंग चिल्ड्रेन ये गुड़ी को लिखबार अच्छे बहुत बहुत सहज द अंडरग्राउंड को से क्या सांगे तुलना करछंती फूल मानकर स्कूल नो स्कूल ऑफ द फ्लावर्स द रेन्स जिते बड़े वर्षा आसे ना ताकू कहा संगे तुलना करछंती हॉलिडे यू नो हॉलिडेज पिंक येलो एंड व्हाइट पिंक येलो एंड व्हाइट So what are these? These are not the natural colors. ये dialogue टा तीन थोड़ा पहले कोई चली नहीं. These are the natural colors. Rather, these are the different races of the, flower children. Okay. So these are the colorful dresses. प्रकृत रे एया ताकू कंपेयर करा जायछि ए जिंसो संगरे. Then the sky. आकाश कौन? Yes. They are home. Okay. So home of the flowers. Home of the flowers. ये फूल पी भले देखा गला ये फूल मानकर प्रकृत ठिकाना बा प्रकृत घर होउची आकाश जोठारे तारा माने चिकमिक करंती हुए द स्टार्स shine which is the real place of these flowers and the last the stars पिले आम साधारण कहू ना मनीष मरीगला आकाश रे गोटे तारा हे रहे अमर आत्मा जहाँ को कहती हाँ
So what is this? Now resting place of the deceased person. Okay, resting place of मृत लोकंकर बासस्थली, resting place of the deceased persons. Okay, so this was all about the point 2. ଏବେ ଦେଖ ପିଲେ point 3, the theme of a poem is the main idea of the poem. 100% गोटे कथार मुख्य जिनसटी कौन तार विषय वस्तु. the theme may not always be stated, तेणु सब मुख्य विषय वस्तु को सीधा सड़क मध्य कहुई न थाए, but can be hinted as indirectly. ओके, जहाँ अप्रत्यक्ष भाव में सूचित करा जाई पारे. which of the following ideas support the theme of the flower school? देख किछि आइडिया देछि फ्लावर स्कूल नहीं कि फूल विद्यालय बा फूल मानक पई विद्यालय, एमिति नामकरण पछरे कौन कौन धारणा बा नोशन अच्छी जो कि यार ना एभली भाव में तो फ्लावर स्कूल दिगला. अदरवाइज फूल माने कौन के स्कूल जाती ना पाठ पढ़ती. देखो देछि लव फॉर वाइल्ड लाइफ, अप्रिसिएशन ऑफ नेचर, प्रेज ऑफ गॉड, फीचरिंग इमेजिनेशन ऑफ अ फ्लावर स्कूल, dislike for the strict school system, lauding the schoolmaster, longing for the mother. तो पिले ये सब सेंटेंस रो माने तुम बुझी पाउथबो. एथिरे लव फॉर वाइल्ड लाइफ ता नाही. यू नो रविंद्रनाथ टैगोर as we studied here, the common is nature. तांकर रविंद्रनाथ टैगोर समस्त लेखार मुख्य विषय वस्तु होची कोन? नेचर बा प्रकृति. से जड़े प्रकृतिर जड़े साहित्य उपासक. ओके, तेणु एथेर आमर को पॉइंट गुड़ाक रहिला, जो पॉइंट गुड़ाक कि एभली विचित्र नामकरण को समर्थन करती से सब पॉइंट गुड़ाक है लव फॉर वाइल्ड लाइफ, फीचरिंग इमेजिनेशन ऑफ अ फ्लावर स्कूल एवं लंगिंग फॉर द मदर. एवं माँ प्रति जमती स्कूल छुट्टी हेले पिला खेला खेली करी माँ पाखक छुटी जाती बा दीर्घ दिन पर जमी बापा माँ को भेटापी छुआ व्याकुल हो जाती, ठीक सेमती से कल्पना करिसेंती जे ये फूल मानकर जो भाव में जो समय अवसर समय आसे, छुट्टी समय आसे, लीजर टाइम आसे, से माने आनंद रे हसी खेली निज माँ कोल को फेरी जावाक चाहती. सो दीज आर द 3 points: लव फॉर appreciation of nature, featuring imagination of a flower school, and longing for the mother. Okay, it गोटे कथा देछि dislike for the strict school system. No, this can't be. And lauding the schoolmaster. Lauding means praising the schoolmaster. It is schoolmaster को मध्य किछि appreciation बा प्रशंसा करा जाय नाही. So these are the 3 points. The poet's longing for his deceased mother creates dash in the reader's mind. ओके, तांकर मृत माँ प्रति तांकर जो भावना, ये जो दुख प्रकाश करवाटा पाठक मन रे कौन सृष्टि करे? पीटी. पिले देखो जो पीटी शब्दर माने होची, ओके लेट मी क्लीन दिस. पीटी ये शब्दर माने प्रथमे बुझीबा दरकार. पीटी मीन्स व्हेन यू फील सरो फॉर समवन, व्हेन समवन सफर्स, व्हेन यू सफर, व्हेन यू फील सरो, व्हेन समवन सफर्स. माने when you feel sorrow, when you feel sorrow as someone suffers, as someone suffers. शुद्ध ओडिया रे कहिले पिले अन्यर दुख देखी बा अन्यर दुख जोगु निजे दुख प्रकाश करिबाटा हला पीटी. So the poet's longing for his deceased mother creates pity in the reader's mind. Now see, let's do the activities. पिले एठी गोटे रोल प्ले अछि जोटा कि आमको एठी किछि करिवार नै, एटा को क्लास रे तुमको करा जिवो. The students play the roles of a small boy and flower child in pair and practice the dialogue naturally. They are to be invited in front of the class to play the role. They change their role after the first round. Okay, जने प्रथमे बॉय हबो, तापर जने फ्लावर चाइल्ड हम, तापर पुणी जड़े फ्लावर चाइल्ड पुणी जड़े बॉय, एमती एक्सचेंज करके रोल प्ले हम. सो
यू नो इट्स अ काइंड ऑफ फन एक्टिविटी तेणु या भितर आमर किसी ए करिवार नाही. आई होप यू विल एंजॉय दिस फन एक्टिविटी इन योर क्लासरूम. एबे देखिबा सेकंड बीट लिसन एंड करेक्ट. कौन लिसन एंड करेक्ट अच्छी देखो. The teacher reads aloud the following sentences with some intentional factual errors. Okay. जानी शुणी टीचर किसी सेंटेंसेस को भूल करके कहिबे. The students listen and correct them saying excuse me sir or ma'am I think it is not this but it is that. एटा को न लिखिले बिले तमे बुझी परिबो नाही. मोटी लिखु छी देखो कोन हेछि बेले सेंटेंस रे जानी शुणी की भूल रखा जाए एंड इफ यू कैन फाइंड आउट द एरर देन इट्स अ ग्रेट थिंग. तेणु देख आम कौन कहवा एक्सक्यूज मी सर और मैम. ओके ये लिखुँ एक्सक्यूज मी सर और मैम it is not dash but it is dash but it is dash. देख बोले मु लाइन को टिके ब्रेक करके लिखी तुमको बुझा टिके सुविधा हम. कहला when the storm clouds rumble on the earth June showers come down. तो ये जो मेघ घड़घड़ी कोठी देखा दिए. ओके कोठी देखा दिए माटी उपरे अर्थ उपरे नो कोठी इन द स्काई. आकाश रे से माने दीर्घ एवं विस्फोरक शब्द घड़घड़ी सृष्टि करती. तेणु यही पॉइंट देख आम कौन लिखा यहाँ हूँ 2 नंबर एक्टिविटी पिले. ये कहवा एक्सक्यूज मी सर और मैम आई थिंक इट इज नॉट ऑन द अर्थ. माटी उपरे बा अर्थ उपरे यह नुहे बट इट इज इन द स्काई. परम यह आकाश रे. तेणु जानी शुणिकी प्रति सेंटेंस रे किछि फैक्चुअल एरर रखा जाइछि. द मोइस्ट वेस्ट wind comes marching over the heath. so the moist west wind नुह east wind. पुनी देखो सेकंड बीट रे कौन कहिबार अछि एई जगह रे ना जे इट इज डायलॉग विल बी सेम एक्सक्यूज मी मैम और सर आई थिंक इट इज नॉट कौन वेस्ट विंड. इट इज नॉट वेस्ट विंड. ओके but it is east wind. थर्ड बीट देखो the wind blows the back. तो देखी बैक पाइप्स रो शब्द आसे ना among the bamboo trees. तो आम कौन कहबा डायलॉग रिमेन सेम. I think it is not among the pine trees. Among the pine trees but it is among the bamboo trees. Among the bamboo trees. Okay. The crowds of flowers dance upon the bamboos in a very excited way. पुणी अगेन देख फर्स्ट मिस्टेक्सटा कौन ओपन द बैम्बोज. इट इज नॉट ओपन द बैम्बोज बट इट इज ओपन द ग्रास. इट इज अपॉन द ग्रास. द फ्लावर्स गो टू स्कूल ऑन द टॉप ऑफ अ हिल. गोटे पहाड़र अग्रभागे थिबा स्कूल को सेमाने जानती कि नो. सो एटा कोन हबो ऑन द टॉप ऑफ अ हिल. अब सेकंड पार्ट बट इट इज कोन अंडरग्राउंड. The flower children do their lessons with their classroom doors open. ना कबाट बंद करी से माने पाठ पढ़ंती. So it is not classroom doors open.
classroom doors open. Okay, so it is with the classroom doors shut. The classroom doors shut. Seventh point, their teacher makes them stand under a tree. So under a tree is wrong. Under a tree is wrong. They have their holidays at the advent of summer. ग्रीष्मर आगमन रे से माने हॉलिडे पांती ना वर्षार आगमन रे. ओके, सो द एडवेंट ऑफ समर इज रॉन्ग. द एडवेंट ऑफ समर इज रॉन्ग. सेकेंड तले करेक्ट कौन ना द एडवेंट ऑफ रेन्स. लास्ट वन आउ लिखुनी बोले जगह नहीं. Their home is in the sea. No, I may write here. In the sea. In the sea. samudra re tanko ghar kouthi akasha re. In the sea is the wrong answer. In the sky. Okay, and the last one, the flowers are eager to go to their school. So to go their school is wrong. Okay, the correct one is to go home. तो आमे कौन देखिले पिले এই एक्टिविटी रे भूल जिनसटा को आमे प्रथम ब्लैंक स्पेस रे रखिबा. आई थिंक इट इज नॉट दिस बट इट इज दिस. तो एई गुडा कहूची कोन करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच सेंटेंस. ओके, सो एबे देख पिले गोटे राइटिंग एक्टिविटी अछि. दिस इज वेरी सिंपल एंड वन ऑफ द हेल्प बॉक्स. देखो पेज नंबर 74, you know, there is a box in the writing portion. हेल्प बॉक्स रे कौन कौन वर्ड देछि? मदर, आर्म्स, हरी, ग्रेट, ईस्ट, बैकपाइप्स, फ्लावर्स, रेन, अंडरग्राउंड, डांस. सो A B C D E F G H I and J. Okay, so many fill in the blanks options are there. Okay, first कौन हबो? When the dash wind, पक्का this is going to be east wind ना. approaches blowing its, कौन बजाए तार को जंत्र को बजाए? bagpipes. bagpipes is the second fill in the blanks. To her lot, to her lot, the advance of dash. Okay, of rain. The dash blooms, the flowers bloom and dash, bloom and dance. Upon the grass in dash happiness, in great happiness. The poet thinks that before the arrival of spring, the flowers go to a school. जीरे कौन अंडरग्राउंड. कौट स्कूल टा? भूतल माटी तले थिबा स्कूल. अंडरग्राउंड. And learn their lesson. They have their holidays only when it rains, and they come out rushing in colorful dresses. The sky is their home towards which they raise their dash. कौन बढ़ाती? से मानकर हस्त बढ़ाती, arms. Because their dash lives there, because तांका माँ सेठी बास करंती. Their mother lives there, and they are always in dash to go home. माने सब बड़े तरतर हुअंती, व्यस्त हुअंती निज घर को फेरी जीवा पाई. So they are always in a hurry. They are always in a hurry to go to home. So पिले एई सेक्शन रो 3 नंबर सेक्शन राइटिंग यार शेष क्वेश्चन टा देखिबा. Imagine that you are a child of a flower school. Write a letter to your mother describing your experience and feelings in your school. You may begin your letter as follows.
ओके देख केमती आम लिखिपर समस्ते देखिपु यू नो पेज नंबर 75 डियर मदर एपटे लिखाई फ्लावर स्कूल पुट अ डेट हाउ आर यू यू शाल बी ग्लैड टू नो दैट आई गो टू स्कूल एवरी डे डू यू नो हाउ एंड वेयर आवर स्कूल इज द स्कूल इज सिचुएटेड अंडरग्राउंड ये भूतल तले बा माटी तले आमर स्कूल अवस्थित तापरे देख जहाँ क्लास टीचर इज डैश बोली कथाटी लिखा अच्छे ओके तेणु आम ये कौन लिखिपर इन एसोसिएशन विथ दिस सेंटेंस जे तेणु से कहले द स्कूल इज सिचुएटेड अंडरग्राउंड सो वी स्टडी आवर रिलेशंस विथ द डोर्स ऑफ आवर क्लासरूम शट and if any one of us tries to come out to play before the class teacher who is very strict makes him stand in a corner. We wait for the rains come and as it is the time when we have holidays. In holidays we come out in pink, yellow and white dresses and we have lots of fun. तो एतिक टोटल कथा तेणु जो लिखी वी मेक अ लॉट ऑफ फन तेणु ये जो ड्रेसेस कथा तुम से पर्यंत लिख कि देखी बट आवर क्लास टीचर इज जो लिखी कौन बट आवर क्लास टीचर इज एठू आम कौन ऐड कर बट आवर क्लास टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट जाए विद्यालय छेड़ा कर दिंतु ये कथा गुड़ाक लिख से माने वर्षा हेले बाहर को आसी से जो खेलती कौन वी मेक अ लॉट ऑफ फन ठीक ये सेंटेंस पूर्व लिखा है ना वी मेक अ लॉट ऑफ फन केमिति से माने मजा करती पूर्व ये सेंटेंसेस गुड़ाक रंड केमिति पाती जो क्लास टीचर को कथा कहगला से ये जिनस गुड़ा रहा then शेष को लिखाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द हॉलीडेज आई मिस यू अ लॉट मॉम योर लविंगली तापरे नेम ओके सो दिस वाज द लास्ट राइटिंग एक्टिविटी ऑफ द पोएम द फ्लावर स्कूल आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द poem and its question answers. So thank you all.